Next, I'd request Ms. Kanchan Pant to take the stage. She's the director of Dear Latika. Up next, we have Mr. Vinod Rawat, the writer and the lead actor of Pushtaini, also known as Ancestral. And last but not the least, Mr. Raghuvir Joshi, the director of Sahela, Companion. All 4 films are playing in Focus South Asia, and we are very, very happy to have them here. I would begin with certain questions to the panel, and then after a couple of questions, we can open up to the press in case they have questions. So one thing I noticed about all of you is the varied background from which you come. Varun, you are like a poet, lyricist, before you came to making films, and Kanchan, you've been like a writer for radio and other media, and you were like an acting coach and before you made your debut film, and Raghuvir, you were also a dialect coach for Dev Patel. And so, yeah, so you have a background that is not like professionally filmmaking. So I would like to begin with asking you how you came to your film. Maybe I'll start with Vinod first. Pushtaini is a film about a struggling actor in Bombay, in the belly of the beast here. And this actor, played by Vinod, he gets into a problem with his colleague, and he needs a lot of money. So he has to go back to his hometown in Uttarakhand to take care of this money. And this is in some ways a journey towards his own childhood. So I wanted to ask you first how you came to this film. How did you arrive at this subject and this whole journey? ये आइडिया उसी टाइम पे नहीं आया था. ये आइडिया काफ़ी टाइम से सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा था. 20 सालों से मेरी पैदाइशी दिल्ली की है और मेरे पिताजी उत्तराखंड से हैं. तो हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाया करते थे. और उस 20 साल में मैंने उन घरों को, जैसे लोग एक दाढ़ी, एक अनार होता है, उसे सजाते थे, आंगन सजाते थे, और वो धीरे धीरे खंडर होते हुए देखे मैंने, इंक्लूडिंग माई हाउस ऑल्सो. सो अगेन दिस माइग्रेशन, जो हर इंसान एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए शहर जाता है. इवन मेरे फादर मेरा खुद का घर, हम उत्तराखंड से दिल्ली आए. और इवन मैं, जो दिल्ली में पढ़ने के बाद भी मैंने बोला पैसा तो बॉम्बे में कमाना है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ बॉम्बे में है, फिल्म मेकिंग बॉम्बे में है, वहाँ जाना है. सो ऑल दीज थाट्स. एंड प्लस कई बार मैं जैसे मैंने बताया कि मैं एक्टिंग वर्कशॉप्स करता था, तो कितने लड़के बस उठ के आ जाते थे, एंड दे हैव ज़ीरो आइडिया एंड दे आर सो वनरेबल. सो अगेन कोविड टाइम, आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं लाइफ को, एंड दैट्स हाउ दिस थॉट केम, और मैंने फिल्म लिखी. Kanchan, Dear Latika is an intense, timeless romance, and very twisted and very, very toxic romance in some ways. It's set in Almora. It's about, you can't say it's about, it features this young man who's doing his higher studies. I mean, he's preparing to go abroad, and he falls in love with this woman who's married off to another man. And then what happens, his reaction to the strange situation they both find themselves in. So in some ways it's a timeless story because it could happen at any time. So I would like to know your journey. It comes from 2 of my own experiences. One, I knew a girl, something like Latika, and then the boy, I think it's me, something that I did in the past, which I still regret. I mean, it's not in the same way, but not if it's not too personal. But when I moved to Delhi many years ago, I was a very shy, introvert, and kind of cowardly person. And one day I was going to office. I used to work with a news channel, and I was going to the office, and I saw a man lying on the road, on the side of the road, and I could see the blood. I could not see what exactly had happened to him. I don't know whether he was alive or dead. But I did not have the courage to go there, to stop my auto, and to go there and to help him, or at least to find out what happened, to call the police. Nothing. I had no idea what to do, and I just left. But I could not sleep with that thought. I still cannot. I mean, there are many days I think about that boy, that man, what would have happened to him. So I realized I was not a bad person. I was not a monster. It's just I had some hidden
cowardness in me, there were some insecurities, there were some complexes which I could not deal with. So that's why, I could not take any action. So Mayank became the representation of that, coward person inside me. And because I was a writer and I had written, I made this film almost 3 hours long initially. But that during COVID, like everybody did, that was the time when I could actually sit down and, write the script and rewrite the script again and again. And that's how it happened. Varun, your film is quite nakedly autobiographical. The years and everything is, it looks very personal. All India rank is about this young 17, 18-year-old boy who's preparing for IIT like most Indian young boys do. And he's dispatched to Kota where he's put into intense training for the entrance exam. But the film stays largely with his parents who undergo their own experiences through this journey. So Varun, how did you know that this was your subject and this deserved a feature film? Okay, so multiple reasons. One, as you already said, it is kind of autobiographical, semi-autobiographical. In fact, I like to say that it is 100% truth, 100% fictionalized in that way. So this is something which I really feel about on a very personal, deepest level, that in India, once you turn 17, people start treating you like you just turned 27. For some reason, you have to decide the rest of your life at that age. 17 is the cutoff. After that, if you take even 1 week after that, people would be like, this kid is lost, this kid is aimless, this kid is, whatever. People start judging you. And that phase of my life, I remember vividly because, sorry, slightly longish answer, but when my 10th board exams got over, that was in 1996, 10th board exams got over, there was this huge, and that is the time when kids in North India especially get the longest break from school because there's no clarity of what you want to do in 11th, so there's no homework, there's no, generally every year, especially in our schools, there's lots of holiday homework for the next grade. Sometimes the homework is so bizarre that you have to just note down the temperature of all the 4 capitals from Doordarshan News. We would make a register just for that. So that was the only time when we would get that break of 60 days with nothing to do, and suddenly there was this heavy sense of sadness on me on that break, that this is the last holiday of my life. At 16, if a kid is made to think that this is the last holiday of their life, how sad it is. And I remember that feeling for long in my life, that why did I feel that way? Because the world was designed that way. Our education system is designed that way, that once you enter standard 11th, you have to start thinking what you want to do in your life, and whatever you decide in those 2 years, you keep doing that for the next 60 years of your life, which is so bizarre. So I wanted to do something about that feeling. Another thing, I've always wanted to be a filmmaker, as in always wanted to be a director. And the first film I wanted to make was always going to be this personal, whether it is this story or another couple of personal stories I have from different phases of my life. But this one resonated the most with me because of again my whole rage against the education system, which I didn't put in the film as a rage, but just as the internal monologue of this kid, 17-year-old kid, who has this dreaminess about the world, and that dreaminess is about to be shattered by the system he's part of. So yeah, I think that's why I made this as my first film. And this was a script I knew no one else will make. I'm a writer. I have been writing for other directors for the last few years. But I knew this is a script, if I share it with any other director, either they'll not make it, or if they make it, they'll do a horrible job in terms of getting the sense of it or essence of it.
So even if I'm an untrained director, even if I do a bad job in terms of just the, just I don't know, the operational part of it, of being a director, but I knew that I will get to the honesty of the material, no matter how good or bad it is eventually on a filmmaking level, but at least it would be honest, and that's why I made it. Raghuvir, and Sahela is centers on a gay man who is in a marriage with a straight woman in a city in Australia, Sydney. Yes. Yeah, and but it's also about the diaspora marital experience because it's a marriage between a Gujarati immigrant family and a Punjabi immigrant family. Yeah. So it's a very sensitive coming out drama, but that would be putting it very broadly. So I wanted to ask you about your journey to the film and how did it? Yes, Sahela is a deeply personal film. It's inspired by my own lived experience of discovering my sexuality after my marriage. And of course, that was a massive milestone in my life. And I had to tell that story because apart from understanding sexuality and the complexity of sexuality, what came with it was the understanding of love and the different connotations of love, and which not in the most conventional sense. And that is something which really remained with me and something which I really had to express. So that's where the journey began. I started with a short film called Yaman, which was set in India, and which then became the proof of concept for the feature film. One of my lead producers, Tayyab Madni from Pictureworks Australia, is from Sydney. And he's first gen immigrant from Sydney. So that gave me a very close insight to the immigrant culture. And that South Asian diaspora in Australia is something which is not represented in films. You generally see the diaspora either in America or UK. But this was very interesting. And also as a diaspora, it's, they're always trying to fit in. They clutch on to such a, that cultural identity that there's a line in the film which, character says to Shiba Chadda's character that you shouldn't have come here, we wouldn't be cultural refugees then. And that kind of sums it up for all of them in the film. Because of course the lead couple, they are trying to fit gender norms. It's like embroiled in domesticity, the entire film. So it's and in our culture, like self-discovery is a luxury. So that kind of encapsulated the entire crux of the film for me, and I wanted to explore that. Thank you. And I want to dwell on that point because all your films, in some ways, they are confronting the question of masculinity and sexual politics within the societies that it is set in. I mean, your film is about a man who's kind of coming to terms with the experience, some kind of sexual experience that he had, and then your film is about a kind of masculinity that kind of just goes out of control, even though it's on the surface, it's all like very buttoned down and like very soft. And Varun, your film isn't about that directly, but sexual repression plays a key role because even at back home, you have these incidents that happen to the parents, and this is about this man, this child of 17 discovering himself as well. And your film is, I mean, it's confronting it directly. So I wanted to know this theme of, I mean, like dealing with sexual politics in our cinema is relatively new. It's 10 years ago, you would hardly have films. So do you think that it's a question of time that we are now ready to confront these questions, or do you think it's still relegated to the margins? And your views on tackling a subject that is still taboo and sensitive in our societies? See, understanding of that शायद मुझे बहुत पहले से था. Power of expressing, I think वो मेरे को अभी समझ में आई है. And being an independent filmmaker, we have that liberty to play that part. And I tried. So yeah, that's it. Rest I don't know about. Was it there in that time? Definitely. मैं जब छोटा था, हम दिल्ली में रहते थे और दिल्ली में हम सरकारी कॉलोनीज में रहते थे.
These kind of incident आप हर एक घर छोड़ के होता था, and we know everybody, every family knows everything, but there's no conversation about it. Suppression, fear, a lot of things are there. So वो बात तब के तब दबके भी रह गई. And there are so many guys I've seen that I'm still meeting them. They have so much of anger issues and they don't know where it comes from. And yeah, so I got this thought from there. I won't say that, dear Latika, मैंने कोई sexuality को ये सोच करके कुछ किया है, but I come from उत्तराखंड, like I said, वहाँ पे प्यार करना और प्यार जाहिर करने का कल्चर नहीं है. So I'm going to be 40 in a couple of years, and I don't remember a single time when my father had touched me, hugged me, and these are the men we are raising there. So आज वो father हैं, but he was husband also, at one point. So because we are not physically intimate in any ways, the touching, the feel is not there, तो बहुत सारी चीज़ें, sexuality में भी बहुत सारी चीज़ें unexplored रह जाती हैं. But about Dear Latika, I think it's more about the power struggle, the power dynamics between these two. So, like my protagonist, Mayank, that is, even though he doesn't say it, but he always find himself in a lesser powerful person. He wants respect, he cannot say it. He doesn't want to be called गरीब कहने में उसके ईगो को ठेस पहुंचती है, लेकिन वो कभी ये एक्सप्रेस नहीं कर पाता. सो व्हेन इन देयर रिलेशनशिप द पावर डायनामिक्स इज चेंजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. लतिका नीड्स हिम और वो थोड़ा सा पावरफुल पोजीशन में है. सो नाउ हिज ईगो इज नाउ सेटिस्फाइड, ओके नाउ आई एम समबडी हु कैन प्रोवाइड सपोर्ट टू हर. बट देन things change because Latika is trying to get back on her feet. She's becoming that empowered woman again. And if Latika becomes empowered, what happens to Mayank then? This is what we deal with most of the times in relationships. You always want to love or not. You always want to overpower. You want to be more powerful in the relationship. So I think that complexity, the turn of events happened from that complexity of the relationship. क्या है कि हिंदी में जवाब दूंगा मैं. मेरी फिल्म क्योंकि 90s में सेट है, तो 90s खास करके हिंदुस्तान में मुझे लगता है बहुत ही कुंठित वक्त था, रिप्रेस्ड टाइम था. हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा, खास करके सेक्स से रिलेटेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा डर होता था. अभी भी है, अभी मतलब शायद 20% कम हो गया होगा. एटलीस्ट नाउ देर आर वेन्यूज़ फॉर पीपल टू एक्सप्लोर ऑन देयर ओन. देयर इज़ फोन, इंटरनेट एंड ऑल. जब तक है तब तक. बट उस समय तो कुछ नहीं था. तो उस समय तो मतलब इतना ज़्यादा डर होता था जस्ट. एंड बिकॉज माई फिल्म इज़ ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी ऑफ दिस किड एंड हिज पेरेंट्स एंड द वर्ल्ड ही सीज एंड दे सी, apart from that it's a film which is in my way a time capsule of the 90s. I wanted to catch that era. तो फिर उसमें वो रिप्रेस्ड सेक्सुअलिटी ज़रूर आनी चाहिए थी. वो कुंठा और वो उसके साथ क्या क्या होता है, मतलब उस समय दूरदर्शन होता था और दूरदर्शन पे 8:30 बजे के समाचार के ठीक पहले निरोध कॉन्डम का ऐड आता था. हर रोज़ आता था. और हर रोज़ कोई ना कोई परिवार के 2 लोग उठ के किचन में चले जाते पानी पीने. ये किसी को प्यास नहीं लगी है, लेकिन सबको वो ऐड भी नहीं देखना. वहाँ 4 लोग बैठ के नहीं देख सकते हैं. मम्मी पापा बच्चे बैठ के निरोध कॉन्डम का ऐड नहीं देख सकते थे. तो कभी बच्चे पानी पी रहे हैं, कभी पापा पानी पी रहे हैं. वो फिल्टर सोच रहा है कि झूठ मूठ का यहाँ आए, साला ऑन भी नहीं किया, हमसे लिया भी नहीं पानी, यहाँ घूम के चले जा रहे हैं. तो आई वॉन्टेड टू कैच दैट the feeling of that era, and that's why it is part of that. And apart from also because it is a coming of age film, it is a film about a 17-year-old who is discovering many things, and that's roughly the same time when you are discovering your own body and sexuality. And so that is also kind of in the film depicted. I would just add that the film that you wrote for Anurag Kashyap, Char Chappalein, is dealing with this issue in a more pointed way, the question of repression and its social repercussions. Raghuvir, yeah.
I mean, mine is quite apparent. It's a film about sexuality. So to express a film about sexuality without showing sex is like making a musical without songs. So it just didn't make sense to not show it. And also, the the difference between intimacy and sex between the couple is you can be sexually very attracted to someone but not intimate, and that was very interesting to explore. So yeah, I mean, mine is very apparent that I had to have that that angle into the film. We have press questions before I get into other points. Yeah, my question is to you, Varun. I saw the film All India Rank, and there is this very line that stuck with me is when Shiva Chetta says that IITians can do anything. Like they can go to the arts also and they succeed there, and they can go to sciences also and they excel there. How did IIT help you as a person, like going to that college and going through the whole 4 years of engineering? How did it help you creatively also? I want to know that how does IIT help when it comes to an artistic person? I can't say about every IIT. I went to IIT BHU, Banaras Hindu University, and because it was part of a university system, so there were many departments, not in our IIT, but in the university. So there was a department of performing arts, there was department of theatre, there was music faculty. So we would jam with them to make our own. So we made our own theatre group in college, me and two friends of mine, Animesh and Pranay, and we started working with various groups in the university. तो एक तो वो फायदा हुआ कि we were in a place like a huge university जहाँ पे बहुत सारे departments थे, so we could explore various kind of art forms. But उससे ज़्यादा फायदा ये हुआ because I got selected. I got 4 years of me time actually. No one would ask me. जो वो मेरा स्कूल में 10वीं के बाद से जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक जो प्रेशर था ना कि कुछ करो लाइफ में, अच्छा ये बन जाओ या वो बन जाओ, कुछ बन जाओ, तो वो प्रेशर उसके बाद वो 4 साल के लिए ख़त्म हो गया. सो दोज 4 years एक्चुअली आई डिड इंजीनियरिंग वॉज माई पार्ट टाइम दिस थिंग जॉब. माई फुल टाइम जॉब वॉज थिएटर, रीडिंग, वॉचिंग सिनेमा, writing. I started writing plays in college, my own plays, and directed some of them, acted in some of them, went to youth festival, national inter-university youth festival and all. So that time gave me the clarity and confidence. I always wanted to be a writer, but I also did not know growing up in Lucknow how to be a writer. The closest I knew to being a writer is a journalist. I knew कि अच्छा हमारे घर के पास पत्रकारपुरम था जहाँ पत्रकारों को घर दिए हुए थे सरकार ने, तो वहाँ जाके पत्रकारों को देख के लगता था हाँ ठीक है, ये एक काम है जो कि राइटर भी है, समाज में इज्जत भी है, आपको मंथली सैलरी भी मिलती है, क्योंकि मंथली सैलरी इज द एम ऑफ द मिडिल क्लास फैमिलीज कि आप ऐसा कुछ कर लो जिसमें आपको हर महीने सैलरी मिलती रहे. इसीलिए आई थिंक मिडिल क्लास फैमिलीज ऑल्सो डोंट, वो बच्चे उनके क्राइम में नहीं जाते क्योंकि वहाँ रेगुलर सैलरी नहीं है. दे आर नॉट थिंकिंग दैट वे कि इमोरल है या वो है. उनके लिए ये है कि यहाँ रेगुलर सैलरी नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं. तो क्राइम और सिनेमा दोनों उनके लिए सेम है कि यहाँ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो सरकारी जॉब में जाओ, या उस समय फिर बहुत सारे आईटी सेक्टर आ गया था इंडिया में, और तो आईआईटी के रास्ते आप इन्फोसिस या किसी बड़ी कंपनी में जा सकते हो जहाँ 70 घंटे काम करना पड़ता है और पैसे मिलते हैं. तो वो ज़्यादा क्लैरिटी. तो वो 4 साल अचानक से देन आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट माई लाइफ कि हाँ मेरे को राइटर बनना है और कैसे बनना है. फिर मुझे पता चला एक फिल्म इंस्टीट्यूट है, एक SRFTI है, या जर्नलिज्म के स्कूल्स हैं कि माइका है, IMC है, या माइका भी एक ऑप्शन था कि ठीक है वहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड MBA होता है. या साउथ में कौन सा है वो एशियन कॉलेज, एशियन या ACJ है, हाँ सॉरी वो मैं APJ याद आ रहा था, बट हाँ ACJ है. तो इस तरह के ऑप्शंस मैंने देखने शुरू किए फॉर पोस्ट ग्रेड कि हाँ मैं यहाँ जा सकता हूँ. सो दैट जस्ट गिव मी कॉन्फिडेंस कि ओके नाउ आई हैव अ क्लैरिटी विच काइंड ऑफ टोज बोथ द लाइन्स ऑफ अ मिडिल क्लास ड्रीम ऑफ ओके अ रेगुलर जॉब ऑल्सो, एजुकेशन के थ्रू गए हो. ऐसा नहीं है कि बैग उठा के है ना वो बॉम्बे आ गए फ्रंटियर मेल से जो होता था एक ज़माने में, तो आप समझा सकते हो किसी को. सो आई मेड दैट प्लान.
And that I got because no one was asking me in those 4 years what to do after this. Thank you. I had a general question to all of you. A number of you, I mean, I think three of you have a background in the industry, and then your first film is in some ways breaking out of that and kind of carving your own space out of that. And for you, Kanchan, it's probably the other way, where you're not part of the industry, but you're still working with professionals. So I wanted to ask whether your industrial background has certain advantages that it has given you when you are making your first film, or does it kind of handicap you in certain ways because you're partly part of the industry? So and for you, Kanchan, was there any kind of disadvantage that you were not connected to professional networks when you're making your first film? सो मेरा जर्नी तो शुरू ही हुआ था FTI से. मैंने दिल्ली में थिएटर किया और फिल्म स्कूल पढ़ा, और फिल्म स्कूल में मैंने एक्टिंग पढ़ी. मैं अगेन सेम मिडिल क्लास वर्किंग क्लास बैकग्राउंड. आप बॉम्बे आते हैं और आपके पिताजी आपको 8,000 रुपये देते हैं महीने के लिए, जिसमें आपके 4,000 रुपये रेंट पे जाते हैं, 4,000 रुपये पे खाने पीने पे जाते हैं. आपके पिताजी 6 महीने के बाद भी कुछ नहीं बोलते, लेकिन आपको ये समझ में आ गया है कि ये मुश्किल हो रहे हैं 8,000 रुपये. इट्स नॉट ईजी फॉर हिम, बिकॉज मेरे पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट में ड्राइवर थे, 3 बच्चे थे उनके, और मुश्किल से 10,000 रुपये सैलरी आती थी. सो आपके 17 साल में हुए, मैं 27 साल में ये सोच स्टार्ट हुई मेरी. तब तक मैं भटक रहा था, मेरे पास शायद ये अपॉर्चुनिटी थी. और आप बॉम्बे आते हैं और आपको लगता है कि भाई इससे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरह की आपकी शक्ल है, कट काठी है, आपको FTI में सपने दिखते हैं. आप तो कहते हो कि हम बॉम्बे जाके आग लगा देंगे, क्योंकि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं. बॉम्बे एक अलग सच्चाई आपको देता है. और आप ऑडिशन के लिए जाते हो तो आप देखते हैं कि ये कौन 6 फीट के गोरे चिट्टे दूध के धुले कौन है, ये हम कौन है और ये कौन है. और ये क्या होता है कि आपको वो दूर से एक कास्टिंग डायरेक्टर दूर देखता है और कहता है ना आगे मत, नॉट फिट, बिकॉज ये दूध के धुले आएंगे. सो देन यू हैव दिस रियलिटी चेक कि करना क्या है, घर वापस जाना है, नहीं. देन आई एक्सप्लोर्ड माई स्पेसेस ऑफ असिस्टिंग इन कास्टिंग. मैंने कहा घर चलेगा. माई जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम FTI to struggling as an actor, then doing casting, then became a casting director, then my workshop started happening. तो मैं वर्कशॉप डायरेक्टर बन गया. देन मैं सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन करने वाला मेरे को मौका मिला, मैं वो बन गया. देन मेरे को नीरजा में एसोसिएट डायरेक्टर का काम मिल गया, मैं वो बन गया. वहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली आर्या डायरेक्ट करने की. मैंने एक वेब सीरीज़ है आर्या, जिसका मैं डायरेक्टर हूँ, सीज़न 1 और सीज़न 2. मैंने कहा वो भी कर लिया. सो दिस एवरीथिंग which really helped me to make my film, because मेरे को मेरे एक बड़े अच्छे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली थी कि विनोद, हम ना 2 लोग होते हैं, एक होता है अंदर का बच्चा और एक होता है बाहर का बच्चा, बाहर का बाप. उस बाहर के बाप को ना काम पे लगाना पड़ता है अंदर के बच्चे को पालने के लिए. सो फॉर पुश्तैनी इज़ माई अंदर का बच्चा, जिसको मैं पालने के लिए ये बाहर का बच्चा इधर उधर काम कर रहा है. सो या दैट्स माई आंसर. थैंक यू. मुझे इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े ना होने के फ़ायदे भी हुए, नुकसान भी हुए ऑब्वियसली. तो इन माई हेड आई वॉज आई नेवर थॉट दैट आई बिलोंग्ड टू दैट काइंड ऑफ वर्ड. लॉन्ग अगो आई हैड डिसाइडेड दैट आई लिव इन माई बबल, जिसमें मैं सोशली ऑकवर्ड अपने आप को मानती हूँ. आई कैन नॉट इंटरेक्ट दैट मच, आई डोंट कनेक्ट विद पीपल दैट मच, आई डोंट लाइक टू शो ऑफ, आई डोंट सो आई हैव ऑलवेज बीन इन अ बबल. और आई डोंट, आइडियोलॉजिकली आई एम अ रिबेल. I don't act rebel, but I am ideologically rebel. So I cannot accept the hierarchies. For me, it's मेरे को, मेरी सोल को, मेरी आत्मा को बहुत तकलीफ पहुंचती है जब 4 लोग एक जगह पे बैठे हैं and one is star and other is, I had been that kind of person. I hated Sachin Tendulkar all my life just because it's not his fault, but बिकॉज ये होता था कि कमेंटेटर बोलते थे कि एक दिन दिनेश कार्तिक 10 नंबर की जर्सी पहन करके मैच खेलने आए और उस दिन सचिन मैच में नहीं थे और इंडिया जीत गया. तो कमेंटेटर सेज कि देखिए सचिन तेंदुलकर यहाँ नहीं है तो भी वो यहाँ है. एंड आई वॉज आई थिंक 14-15 years एंड आई वॉज लाइक नो, दिस इज़ नॉट डन, दिस कैन नॉट हैपन. सो आई हैड दैट काइंड ऑफ आइडियोलॉजी. और मुझे लगा कि दिस इंडस्ट्री, पीपल लाइक अस डू नॉट बिलोंग हियर.
So I was a writer and I was happy writer. I was living with my characters. You know, I could decide what they will do, how they will behave. But then एक बार मुझे लगा कि मैं lost हूँ, and I just left everything. I quit and I started just traveling. I went for a solo travel across the country. I mean, मैंने 7-8 states cover किए, और उस दौरान I met इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग लोग जो कि बहुत टैलेंटेड लड़के लड़कियां हैं. दे हैव ऑल द टैलेंट्स एंड या तो वो मेरी ही तरह खुद को इंडस्ट्री के लिए एप्ट नहीं पाते हैं, या दे डोंट नो एनीबडी यू नो कि जिसके थ्रू वो इंडस्ट्री में दाखिल हो सके. बट आई नो दे हैव इमेंस टैलेंट इनसाइड देम. सो ये मेरे को एक थॉट आया कि यू नो पीपल लाइक अस also deserve to tell our stories, because and to be honest, we have a raw vision. हम लोगों के पास रॉ टैलेंट है, हम किसी फॉर्मेट में बधे नहीं हैं. तो दिस इज एक्चुअली दिस हेल्प्ड मी, क्योंकि जब हम लोग अपने सेट पे काम कर रहे थे तो वी वर नॉट वर्किंग लाइक अ फिल्म सेट. वी वर वर्किंग लाइक अ थिएटर, जहाँ पे कि सब लोग बराबर हैं. एवरीबडी इज ट्रीटेड द सेम वे. अपने खुद के नियम बना रहे हैं, अपने खुद के फॉर्मेट्स बना रहे हैं. एंड इट वॉज अमेजिंग बिकॉज पीपल जो उस फिल्म में हमारे साथ काम करे वाले लोग अब जाके इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एंड दे आर सेइंग वो एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग था. But at the same time, it was difficult. Like I said, I did not know anybody in the industry. So when I was trying to recruit the crew, मैं लोगों को अपने साथ वो करने की कोशिश कर रही थी, तो even film institute के बच्चे तक, they were not ready to come because I heard one way, why are you going there? They are not filmmakers. Yeah, I understand. We were not filmmakers, so it was really difficult. But eventually, I think all that matters is what your intentions are. हम ऑनेस्ट थे, अपने काम के लिए ऑनेस्ट थे, हम अपनी कहानी के लिए ऑनेस्ट थे. हमको पता था कि हमको क्या कहना है और कैसे कहना है. वी वर नॉट बॉदर्ड. एंड द थिंग इज, आई एम नोबडी, सो आई हैड नो बैगेज. I did not have to prove anything to anybody, so I could do what I wanted to do, and I'm happy that I was able to do what I wanted to do, and eventually it turned out to be good. So yeah. ओके नहीं, मैं तो मतलब कुछ सालों से काम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे तो काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा हुआ. दैट people trusted me when I went to them for working on this film. Like one big example is शिबा चड्डा जी, जिनको मैंने बोला कि एक मतलब छोटा ही रोल है, इट्स नॉट लाइक द मेन कैरेक्टर एंड ऑल. And but she was very 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 kind and very happy to just come and perform. तो उसी तरह से एक एक्चुअली फिल्म बनी क्यों है उसके पीछे भी मतलब एक बड़ा नाम है, जयदीप साहनी, जो कि बहुत ही कमाल के राइटर हैं, मेरे बहुत पसंदीदा राइटर हैं. और उन्होंने 2014 या 15 में या 2015 में ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी, और तब उन्होंने कहा था कि तुम बनाओगे क्या, ये खुद बनाना चाहते हो? मैंने कहा हाँ, मैं खुद डायरेक्ट करना चाहता हूँ. तो फिर उसके बाद कुछ हुआ नहीं. मैं 2-3 साल मैंने ट्राई किया, बट मैं खुद भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था कि इफ़ आई हैव it in me to become a director. And then Sacred Games happened, where I was involved for the 2 seasons, and I was so busy. And then Sacred Games, when it became a success, I got a call from Jaideep Sani, and at that time I was getting calls from lots of people in the industry to congratulate me. So I thought he's calling me to congratulate me. And he called and he did not congratulate me at all. He had not seen Sacred Games. He just said ki I'm seeing that the show is a success, so don't forget about that script you had written, because now you'll get lots of writing work. It's a dream for every writer. Now you can choose what you want to do as a writer after Sacred Games, but then that will make you forget the script you had written. So don't forget, you have to make that. And that was so kind and so amazing of him, incredible of him to remember that. I said, okay, I'll make that film. And then again, I got busy writing another film with Dibakar Banerjee, Sandeep or Pinky Farrar. And by the time that film ended, I got a call from Mr. Sriram Raghavan, who had read the script, because Jaideep Sahni had sent it to him after Andhadhun, saying now Andhadhun is a success and now you can help other films get made, and so just make this film. Varun has not made any film, but this script is proof that he can make something.
So Sriram Raghavan called me, and I met Sriram Raghavan and Sanjay Rautre of Matchbox Pictures. So Matchbox produced Andhadhun, and now Monica, my darling, also. And Sanjay and Sriram were there in the room, and they were the first producers I met over 5 years. I had sent the script to many, many people over the years who didn't ask me to change a single word in the script. They said, "Okay, we like the script, and you make it the way you want, and we'll produce it." And that's why the film is Sriram Raghavan Presents and produced by Matchbox, Sanjay Rautre, and Sarita Patil. And so it all helped because of lovely people, kind people, writers, supporting writers, actually, in a way that, Jaideep Sani remembered and kept pushing me to make it. And now when I have made it, he has still not seen it. I hope he comes for the second second November show in Juhu. He has promised he will, and I hope now he doesn't regret pushing me. Like now he doesn't say, "Arey yaar, tu nahi banata." I hope that, but yeah, but still, I mean, the credit to him that it got made. So yeah. Yeah, my journey has been a bit different. I studied film here, and then I started working as a freelance assistant director and landed up somehow on the sets of the Best Exotic Marigold Hotel, which was shot in India. I was a set PA, and somehow, really connected with one of the lead actors, Dev Patel, and then we forged a friendship, and then I assisted him on several other films. Reluctant Fundamentalist was one, Hotel Mumbai was another, and then I was one of the co-producers on his directorial debut, Monkey Man, which is about to come next year. So he almost kind of mentored me through my journey, and he's one of the exec producers on Sahela. And that's how kind of my journey began. Somewhere, films shot in India, but also international films, and then also worked in the international space. So yeah, and then once he came on board as an exec producer, we got my on-ground producers from Sydney, which is Pictureworks Australia, and Radhika Lavu, which has LNR Films, is from India. So it's a bit of a hybrid. Yeah, that's been my journey. Hello. Myself Irfan Jamiawala. Vinod, I have one question for you because you are from film school. और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आप हिंदी में बोले, कि मेरा मानना है कि थॉट्स आइडिया हिंदी में आते हैं, और मेरे ख्याल से वरुण से भी मेरी डिस्कशन इस पे हुई है. वरुण को याद होगा. I have been working in this industry since last 25 years with all the craft, filmmaking to news, theater. Right now I am handling on the news channel name called News 360. I am from Jamia. All the people, the reputed people, the pass out from Jamia, the Shah Rukh Khan, Kabir Khan, all the thing. तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, FTII और जामिया मिलिया मास कम्युनिकेशन, यहाँ पर एक स्टूडेंट को राइटर, डायरेक्टर, एक्टर बनाने में सरकार को 20 लाख रुपया खर्चा होता है, कम से कम 20 से 25 लाख. तो हैव स्टार्टेड, आपने जो ट्रेनिंग ली वो एक्टिंग की ली. एक्टिंग इज़ वेरी डिफरेंट, डायरेक्शन इज़ वेरी डिफरेंट, द क्राफ्ट ऑफ सेम बट थॉट इज़ वेरी डिफरेंट. तो आपने जो ट्रेनिंग ली वो एक्टिंग की ली, और आपने यहाँ बहुत स्ट्रगल किया, जैसा आपने बताया, और आपने जर्नी वो चीज़ें. मैं स्ट्रगल वर्ड नहीं यूज करूँगा, मेरे को नहीं बिलीव है स्ट्रगल में. No, there is technical what is a struggle. There is no exist this word in any dictionary. Right, sir. Yes. So struggle word is only exist in our industry. तो आपने जो ये किया, तो आपको कहीं नहीं लगता है कि हमारी सरकार जो है, हमारे जो आपके एलुमनी एसोसिएशन जो है, उनको ये सोचना चाहिए कि जो पास आउट लोग जो है उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ऐसा? सर, बाय द वे, जो कोर्स भी है ना, वो भी काफ़ी सब्सिडाइज है. जो हमारा FTI का कोर्स भी तभी है. बोला मैंने. सो मतलब मेरे को तो राइट नाउ ऑनेस्टली सरकार से कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ को लेके, क्योंकि सॉरी जी सर, बिल्कुल है.
हमने भी पढ़ा है, हमने भी पता है कितना खर्चा होता है एंड खर्चा बहुत होता है सर 20 से 25 लाख रुपए मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है उस पर। सर मैंने तो उस टाइम 25 पे लाख रुपए बर्बाद हो रहे हैं आपके ऊपर। अच्छा तो आप एज एन एक्टर आप ट्रेनिंग ले रहे हो जी, तो वो सरकार को, आपके एलुमनी एसोसिएशन को या भारतीय जो सरकार है उसको ये सोचना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये हमारी कंचन जो आती है वो कोई बैकग्राउंड नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर। हाँ, तो आपको ट्रेनिंग क्यों दिया जाए, ये पैसा क्यों बर्बाद करवा रहे हो आप? सर लेकिन सरकार हमें सिलेक्ट भी कर रही है ना, सरकार हमें सिलेक्ट भी कर रही है ना, हम तो तो ऐसे यू हैव टू टॉक टू योर एडमिनिस्ट्रेशन ना, For what, sir? फ्रॉम एफटीआई, राइट फ्रॉम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, राइट, समझ रहे? क्या क्योंकि उनको क्या हमारे बोले? पास में यहाँ उदाहरण है कंचना पंत, जो कि एक ऐसी बैकग्राउंड से आती है कि डजंट नो अबाउट हाउ टू मेक द फिल्म, एग्री, ही डजंट नो अबाउट कि हाउ टू मेक द फिल्म थ्रू शॉट बाय शॉट, बट वो बनाती है, वो चीज़ें होता है। तो आप जो चीज़ें आप इतना खर्च हो रहा है आपके ऊपर, जी वो बर्बाद जा रहा है ना, और वो भारत की इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है। Sir, Acha. if the No, no, people, no, that is- I just want to say that that if is- the people here on this panel were sticking to their domain Leave of it, training, yes. this film, none of these films would exist and we'd be poorer for that. So we are No, glad that these इन्होंने people. इन्होंने मेंशन किया तभी मैंने बोला ये चीज़ें। हाँ, तो everybody ऐसे finds पढ़ा their हूँ own मैं, way. हाँ। हाँ, मुझे बहुत प्राउड भी है सर। नहीं वो मुझे आपका लगता है कि कंचन जी ने बनाई है बहुत अच्छी बात है, बट मेरे को ये लगता है कि इसकी पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी बहुत है। ज़रूरी है, बिल्कुल, मैं ये बात मैं भी कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है। जो मैंने बनाई है और जो इन्होंने बनाई है, टेक्निकली आप देखेंगे तो इनकी फिल्म हमेशा सुपीरियर रहेगी। मुझे बहुत वक्त लगेगा, मुझे करके सीखना पड़ेगा। वो सीख करके आए हैं तो दे कैन डू इट वे बेटर देन मी। सो बस। कंचन माजिद माजदी, वन ऑफ द नोन डायरेक्टर इन द वर्ल्ड, जिन्होंने कहीं से फिल्म मेकिंग नहीं सीखी है, उनसे बड़ा डायरेक्टर मेरे ख्याल से भी इंडस्ट्री में वर्ल्ड में नहीं है। तो दैट इज क्राफ्ट इज वेरी नियर टू, समझ रहे ना? बट वो चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ कहीं और उन्होंने मेंशन किया, इसलिए मैंने कहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं थैंक यू। थैंक यू। हाँ, ऑल्सो सर, हर इंसान की ना एक जर्नी होती है। इनकी जो जर्नी है ना, इनकी जो जर्नी है ना बहुत प्यारी है, बहुत अलग है। मेरी भी जर्नी बहुत प्यारी है, बहुत अलग है। अब प्लीज़ ऐसा ना हो कि मैं पापी ना बन जाऊं कि गलती से मैंने फिल्म स्कूल में पढ़ लिया। बिल्कुल उठाया सर आपने। सर अब ये तो मैं आपको अपना जवाब दे सकूँ। मेरा नाम डीपी मिश्रा है और मैं फिल्म क्रिटिक हूँ। और अभी जो चर्चा हो रही थी काफ़ी क्वाइट इंटरेस्टिंग। एक सबसे दो चीज़ें खुशी की बात है। आपका जो पहला इंट्रोडक्शन था कि आप एक सरकारी कर्मचारी के ड्राइवर के बच्चे थे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इंजीनियरिंग बीएचयू से पढ़ के आपने फिल्म लाइन में आई, यू आर द क्रिएटर। आप भी एक वर्ल्ड को क्रिएट करते हो। राइटर क्रिएट करता है, ब्रह्मा क्रिएट करता है, पोएट क्रिएट करता है। कमियां तो हर चीज में होती है। जो हाँ, जस्ट आई एम कमिंग टू द माय क्वेश्चंस। One is very important, that is the technical writing. अब टी.एस. सिलियट ने कहा था कि जीनियस पैदा होते हैं, बनते नहीं है। ऑथर पैदा होते हैं, बनते नहीं है। लिटरेचर को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आप कन्वर्जन करते हो। तो वहां पर जिस मीडिया को, टेक्निकल मीडिया को, जहां पर आप एक साथ ऑडियो, वीडियो, एनिमेशंस के द्वारा जब आप प्रोजेक्शन करते हो, तो आई थिंक, मुझे जहां तक लगता है कि कन्वेंशनल एजुकेशन, एक नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन, दोनों तरह का ये मंच है। आज की तारीख में खास करके जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंशिया में हैं, तो उसमें मुझे आप सबसे जानना चाहेंगे कि चूंकि आप एक्सपेरिमेंटल साइड में हो, आप उस चीज़ को देख रहे हो, हम एक चीज़ को समझना चाह रहे हैं कि दोनों में आप कंफर्टेबल फील, जैसे इन्होंने बताया कि आपने कहा कि मैं कहीं पापी ना हो जाऊं,
कंचन जी की बात पर, लेकिन आप दोनों का इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह पर है। लेकिन फिल्म मीडिया में मुझे लगता है कि टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसको कर सकते हैं। ऐसे आप लोगों का क्या मानना है? जस्ट आई वांट टू नो, प्लीज। तो बिल्कुल फिल्म जो है वो बहुत ही टेक्निकल मीडियम है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग जैसा ही है, क्योंकि आपको अगर कैमरे की समझ नहीं है, लाइटिंग की समझ नहीं है, एंगल्स की समझ नहीं है, एडिटिंग की समझ नहीं है, और सब में बहुत सारी मशीनें इस्तेमाल होती हैं, महंगी सस्ती सब तरह की, लेकिन मशीनें हैं और मशीनों में बहुत सारी फिजिक्स, बहुत सारी मैथ्स लगती है। तो ये सही बात है कि जितनी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज होगी उतना अच्छा आप फिल्म के ज़रिए अपनी कहानी आप कह पाएंगे। लेकिन वो टेक्निकल नॉलेज सारी की सारी डायरेक्टर को होनी चाहिए ये ज़रूरी नहीं है। डायरेक्टर के साथ सिनेमेटोग्राफर होते हैं, सिनेमेटोग्राफर ट्रेंड होने चाहिए, सिनेमेटोग्राफर को पता होना चाहिए कैमरा का एपर्चर और जो भी उसके सारे बाकी जो कंट्रोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरह से उससे इमेज को इन्हांस करना है, और इमेज को सिर्फ इन्हांस नहीं, इमेज में इमोशन कैसे लाना है, इस सीन में किस तरह का इमोशन है, उसके लिए किस तरह का लेंस लगेगा, उसके लिए किस तरह की लाइटिंग लगेगी, किस तरह की फ्रेमिंग होगी, वो सब टेक्निकल नॉलेज ज़रूरी होती है। सिनेमेटोग्राफर को अपनी होनी चाहिए, एडिटर को अपनी होनी चाहिए, प्रोडक्शन डिज़ाइनर को अपनी होनी चाहिए, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को अपनी होनी चाहिए, डायरेक्टर को इन सब चीज़ों की समझ होनी चाहिए अपनी कहानी के ज़रिए। डायरेक्टर को ये पता होना चाहिए कि मेरी कहानी में इस समय क्या इमोशन चाहिए, इस सीन में मुझे क्या इमोशन चाहिए। अगर वो समझा देगा वो सिनेमेटोग्राफर को, सिनेमेटोग्राफर का काम है फिर उस इमोशन को किस तरह से इमेज में कैप्चर करना है, उसके लिए क्या लेंसेज और क्या क्या बाकी अरेंजमेंट लगने हैं, वो सिनेमेटोग्राफर करेंगे अगर वो अच्छे टेक्निकली सुपर्ब हैं या टेक्निकली ट्रेंड हैं। तो डायरेक्टर का काम है इन सारे डिपार्टमेंट्स को संभालना, इन सारे डिपार्टमेंट्स को कहना क्लैरिटी से कि मेरी कहानी में इस सीन में ये इमोशन इस समय चाहिए। वो इमोशन जो 9 रस हैं हमारे, वो 9 रस में से कौन सा रस है, वो कौन सा भाव है जो इस समय मुझे चाहिए, जो इन्हेंस होना चाहिए या दबना चाहिए। इस सीन में मान लीजिए मुझे गुस्सा ज़्यादा दिखाना है लेकिन साथ में हल्का सा प्यार भी दिखाना है, तो वो अब सिनेमेटोग्राफर का काम है, एक्टर का काम है, सब ट्रेंड है वहाँ पे अपनी अपनी फील्ड में। और डायरेक्टर का काम है उनको अपनी ट्रेनिंग जो उसकी है, भावों की समझ, कहानी की समझ, फिल्म के फाइनल इमेजिनेशन की समझ, वो समझाना है, बस इतना है। अच्छा, एक चीज़ रहेगा, दो चीज़ें हैं कि आ, खास करके जो डायरेक्टर होते हैं, मतलब दैट इज ऑन लोकेशन अपना कैमरा शॉट या स्क्रिप्टिंग करते हैं, और कुछ होमवर्क घर से करके लाते हैं कि यहाँ पर कैमरा एंगल होगा, यहाँ पर क्या होगा, पूरा का पूरा। इसमें प्रेफरेंस आप लोग किस चीज़ को देते हैं? ऑन लोकेशंस और उस पर होमवर्क करके आते हैं, दैट इज देखिए हमको कहाँ से किस चीज़ इसका को जवाब हर इंसान अलग देगा और हर रोज अलग देगा। ये 1 लाख तरह के डायरेक्टर होते हैं और कोई ऐसा तो नहीं है, ये हम साबुन नहीं बना रहे हैं कि एक ही तरह से फैक्ट्री में मशीन चलेगी। हर इंसान अपनी तरह से काम करता है और अपनी तरह से उसका आउटपुट आता है। तो उसमें स्क्रिप्ट का जो थ्रस्ट है जिस पे आप काम कर रहे हो, तो कभी कभी स्टोरी जो मूल मैसेज जो देना चाहती है, ओरिजिनल स्टोरीज, उसमें होता क्या है कि कहानी कुछ और होती है और कहानी कुछ और बाहर निकल जाती है, यदि वहाँ पर नेग्लिजेंस होता है, खास करके ऐसी कहानियों में जो कि सोशल मैसेज की होती हैं। देखिए, तैयारी तो हमेशा मदद करती है। हाँ। आप जितनी तैयारी पहले से करेंगे सेट पे केओस उतना कम होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ। पर स्क्रिप्ट की डिमांड, सिचुएशन की डिमांड, क्योंकि जब आप ऑन सेट जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, तो आपको इतने इसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा कि आखिरी मोमेंट पे अगर आपको कुछ चेंजेस करने पड़े तो आप वो कर सकें। बस बॉटम लाइन वही है जो कि वरुण ने बोला कि आपको एज अ डायरेक्टर पता होना चाहिए कि आपकी कहानी क्या है, आपकी कहानी का जिस्ट क्या है, उसकी आत्मा क्या है और उसके इमोशंस क्या हैं। जब आप उस चीज़ को लेकर के क्लियर हैं, बाकी सारी टेक्निकलिटीज़ हैं। ऑब्वियसली एज अ डायरेक्टर आप जितना जानोगे आप उतना बेहतर अपनी कहानी को कर पाओगे, लेकिन आपके पास सपोर्ट होता है। फिल्म बनाना एक अकेले इंसान का काम नहीं है, इट्स अ टीम वर्क। तो आपकी टीम के लोग जितने ज़्यादा प्रभावी होंगे, अपने अपने काम में एक्सपर्ट्स होंगे, उतनी आप आसानी से फिल्म बना पाएंगे। वी हैव अ क्वेश्चन एट द बैक। सर पीछे उनको भी चांस दीजिए। बट आपने एक जिक्र किया कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, और वो क्या हेलो सही है क्या अभी बात?
सही है। तो आपने ये जिक्र किया कि 17 और 27 की जो बात रखी, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आपको लगता है कि कुछ चेंज की ज़रूरत है। आई एम ऑल्सो विद द सेम बैकग्राउंड, लाइक आप BHU गए, मैं कानपुर गया, और मैं भी फिल्म मेकिंग वगैरह में कोशिश कर रहा हूँ। मुझे भी लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है, बट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या गड़बड़ है। मैं ये जानना चाहूँगा कि लेट्स सपोज कि आप एक फिक्शन वर्ल्ड के क्रिएटर हैं, जिनमें एक ऐसा नेशन है जिसकी आबादी 130 करोड़ है, और आपको एक एजुकेशन सिस्टम प्लान करने के लिए कहा जाए, देन हाउ व्हाट चेंजेस दैट यू वुड मेक, आई मीन रिलेटिव टू व्हाट वी हैव नाउ। जस्ट वांट टू नो कि आपकी, अगर ज़्यादा नहीं 2-3 पॉइंट में, कि आपको क्या लगता है क्या चेंजेस करने चाहिए अगर आपके पास सारी फ्रीडम है, यू हैव टू क्रिएट एनीथिंग फॉर एजुकेशन सिस्टम। आई जस्ट वांट टू नो। थैंक यू। भाई, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे 10 दिन का प्रिपरेशन टाइम दे दो। हाँ, हम मिलते हैं, मैं जवाब दूंगा, लेकिन ये मतलब अचानक से मुझे नायक का अनिल कपूर मत बनाओ कि हाँ मैं अभी बता तू क्या करेगा देश का। ऐसा नहीं, मैं नहीं बता सकता। बहुत सबके पास ख्याल होंगे, और हर एक के पास ख्याल होने से कुछ नहीं होता है। सिस्टम तो, और क्या मतलब, ये बहुत ही हाइपोथेटिकल सा डिस्कशन है। इस समय में अपनी ज़िंदगी में 3 चीज़ें नहीं बदल सकता, देश की एजुकेशन सिस्टम में कैसे बदलूंगा भाई। नहीं, क्योंकि आपने बात उठाई इसलिए। थैंक यू। This will be the last question because yeah, the panel is. I've got 2 questions. Can I ask? विनोद जी से भी पूछना और वरुण जी से भी पूछना था। Go ahead. Yeah. सबसे पहले, क्योंकि हम लोग भी फिल्म मेकिंग स्टूडेंट्स हैं, तो जो जब जैसे आपने क्या कहते हैं डायरेक्ट भी की है फिल्म, और एक्ट भी आप उसमें कर रहे हैं। अभी माइस्ट्रो यहाँ पे लगने वाली है, सेम ब्रैडली कूपर ने भी वही काम किया है। अरे वाह। तो मेरा सवाल ये था कि हाँ, ऑफ कोर्स यू बोथ बिलोंग टू द सेम स्टाटा। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आप करते हैं, जब आप सीन स्टार्ट हो रहा है, तो ये कट का सिस्टम किधर से आता है? जैसे कि आप ही एक्ट कर रहे हैं, आप ही डायरेक्टर है फिल्म के, तो आप सीन के अंदर भी हैं, एक आपके पास एक होलिस्टिक व्यू भी है कि हाँ मुझे ये पूरा चाहिए, ये करना है। तो ये कट का पॉइंट किधर से डिसाइड होता है? जैसे कि कई जैसे क्लिंट ईस्टवुड भी हैं जो कि अपनी फिल्म डायरेक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, तो ये थोड़ा मेरा मतलब ये डाउट रहता है हमेशा। मतलब ये सोचता हूँ कि मतलब इनको कैसे पता चलता है कि हाँ भाई चलो मेरा सीन कंप्लीट हो गया, अब मैं कट बोलता हूँ, या फिर कोई और आप लोग हायर करते हैं, मतलब कुछ आपकी टीम होगी जो ये काम करती होगी आपके लिए? कट के लिए एक बंदा इंडिपेंडेंट फिल्म कट के लिए रखेगा, तू कट बोलेगा। नहीं मतलब ये फिर बीच में कैसे मतलब ये होता है, मतलब ये कैसे So, पता चलता है सीन खत्म सर, मैं आपको बताता हूँ, मैंने ट्रेडिशनल वे ऑफ शूटिंग भी किया है, ठीक है, जिसमें आप डायरेक्टर होते हैं, आपके पास टीम होती है, और आपको जैसे एक तरीके से लिखा जाता है, सीन किया जाता है और बनाई जाती है। और मैं वैसे भी ये भी बताना चाह रहा हूँ कि मैं भी ट्रेडिशनल वे से सीखा नहीं हूँ फिल्म मेकिंग। मैं तो काम करते करते सीखा हूँ। मैंने सीखा तो ट्रेडिशनली एक्टिंग है ना, उसके बाद मैं किसी ने एक्टिंग कोच बनाया तो सेट पे जाके देख लिया तो समझा। सो ऑन द जॉब सीखा है मैंने। आई नेवर वांटेड टू बी अ डायरेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो मेरा एक प्लस पॉइंट भी है, बिकॉज मैं ज़्यादातर सेट पे एक्शन ही नहीं बोलता हूँ। मेरे को लगता है दिस अ वर्ड कॉल्ड फॉलो योर हार्ट, मैं ये बोलता हूँ। उसके बाद जब ख़त्म हो जाता है तो आजकल डिजिटल एरा है। एक टाइम पे फिल्म होता था जहाँ पे 4 मिनट का रोल होता था, उसमें सबकी हालत ख़राब होती थी कि बस इतना ही लेना है, हम फैल फैल के शूट करते हैं। बट द प्रोसेस इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस बिकॉज आई कीप वर्किंग ऑन वर्कशॉप्स, सो इट गिव्स अ लॉट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन का स्पेस टू माई राइटिंग। सो ये फिल्म पुश्तैनी उस प्रोसेस का एक प्रोडक्ट है। आई होप आई गिव यू दैट काइंड ऑफ। ओके, गुड। कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? एक ये था कि हाँ सॉरी, बेसिकली कि जैसे अभी आपने बताया कि डायरेक्टर का काम समझाना है सारे डिपार्टमेंट को कि हाँ ये भाई मुझे ये करना है, ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ मुझे दे दो। तो जो स्क्रिप्ट की समझ है, अगर मैं एक हाइपोथेसिस दूं कि राइटर को भी होती है, एक अच्छी खासी समझ होती है, तो हर बार हम ये क्यों नहीं देखते कि एक राइटर डायरेक्ट करे फिल्म को? क्योंकि स्क्रिप्ट की समझ, उस पर क्या इमोशन वहाँ पे है, क्या सब टेक्स्ट है, क्या वो कहना चाह रही है, लाइन कुछ और है बट कहना कुछ और चाह रही है, तो ये राइटर को भी पता होता है ये चीज़ कि अच्छा ये है। तो ऐसा मतलब हाँ, अभी क्या कहते हैं ज़्यादा लोग ऐसे हो रहे हैं जो कि राइटर डायरेक्टर भी, बट लाइक अगर हम जैसे बिली वाइल्डर और जो ऐसे जो बेसिकली अपनी डायरेक्शन के लिए जाने जाते हैं कि हाँ भाई ये डायरेक्शन हमारा ये है, कॉम्पोजिशन हमने इसमें ऐसे की, स्टैनली क्यूब्रिक, ये सब जितने भी बड़े बड़े
एक डायरेक्टर से, तो लाइक ये कैसे मतलब कि, तो फिर मतलब डिफरेंस क्या मतलब इन द सेंस कि क्यों ऐसा, मतलब कि क्योंकि राइटर को भी स्क्रिप्ट की समझ काफ़ी है, तो वो डायरेक्शन में क्यों नहीं मतलब नहीं कर पाते, मतलब क्यों नहीं वहाँ पे आके वो कर पाते, जैसे कि जो आपने किया कि आप डायरेक्ट भी किया आपने अपनी फिल्म को? तो मुझे तो नहीं लगता नहीं कर पाते, बहुत लोग करते हैं, और जो नहीं करते वो क्यों नहीं करते उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं ना। बहुत सारे डायरेक्टर भी, डायरेक्टर भी डायरेक्ट नहीं कर पाते, ऐसे भी कई होते हैं ना। तो सब तरह के लोग होते हैं. यू आर चूजिंग वन सिनारियो एंड मेकिंग इट एज इफ दैट्स द नॉर्म. दैट्स नॉट द नॉर्म. सो invalid question, I think. On that note, I would like to thank the panelists so much for their insights, and thank you so much. And we at Jio MAMI wish all the best for your films, and I hope your journey will be great and long. Thank you.